So first I will give you a definition of a T3 space. अभी तक पहले recall कर लें, हमने T नॉट में क्या देखा था. So X, so T नॉट के लिए हमें कोई भी दो पॉइंट गिवन है, ओके, X एंड Y. अगर स्पेस T नॉट है तो हमको एक नेबरहुड किसी एक पॉइंट का मिलेगा, किसी एक पॉइंट का से X का मिलता है जो कि Y को कंटेन नहीं करेंगे. ओके, इफ दिस हैपन देन इट इज T नॉट. व्हाट अबाउट T1? कोई बताइए आप में से, T1 के लिए क्या है? सर ऐसा स्पेस मिलेगा, मतलब कि हेलो कि एक्स और वाई दो पॉइंट है, उनके अराउंड एक ओपन नेबरहुड मिलेगा जो या तो दोनों को इंटरसेक्ट भी कर रहा होगा या नहीं भी करेगा. एनी पेयर ऑफ पॉइंट विथ, सर जैसे कि एक कोई ऐसा पेयर हो जिसमें एक्स वाई को कंटेन भी कर रहा होगा. क्या कह रहे हो आप? एक्स और वाई दो पॉइंट, ओके, किसी भी पेयर के लिए आपने दो पॉइंट उठाइए, कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट उठाना था, आपने दो पॉइंट उठाइए. अब आगे बताइए, आगे क्या? तो उसके एक्स के अराउंड एक नेबरहुड हमको यू मिलेगा और वाई के अराउंड नेबरहुड एक वी मिलेगा. या तो यू और वी इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे को कंटेन करेगा या नहीं करेगा. आप कंफ्यूज हो रहे हैं. एक्स के अराउंड एक नेबरहुड मिलेगा जो वाई को कंटेन नहीं करेगा, वाई के अराउंड एक नेबरहुड मिलेगा जो एक्स को कंटेन नहीं करेगा. ओके सर, डजंट मैटर वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग और वो, नॉट. हाँ, तो उसके बारे में तो बात ही नहीं हुई ना, वो तो डेफिनेशन का पार्ट है ही नहीं, हम कह ही नहीं रहे उसको. So there exists a neighborhood U containing X but Y. Okay, it does not contain Y. There exists another neighborhood V which contains Y, which does not contain X. Okay, तो दो नेबरहुड मिले जो केवल उनमें से एक ही पॉइंट को कंटेन करते हैं, दूसरे पॉइंट को नहीं कंटेन करते. Then there exists third space X is T2 if for each pair of points what we have two open sets containing each of them and these open sets are disjoint. Okay, yes, correct. Now come to the third space T3. So in T3 what we have a point and a closed set, say this is a closed set. Okay, so for so given a point X and a closed set F, what we have an open set U containing X and an open set V containing F. U intersection V is empty. Okay, तो अभी एक क्लोज सेट आ गया. अब जब हम T4 में कहेंगे तो दो क्लोज सेट आएंगे, T3. So let me give you the definition. Topological space X is said to be T3 space if given a closed set F, okay, this closed set, and a point X not in F. Okay, X is not in F, so outside F. There are open sets U and V in X such that X is in U, F is a subset of V, and U intersection V is empty. Okay,
सो आप लोगों को मालूम होगा मैंने यहाँ पर बिलोंग्स टू लिखा, यहाँ पर सबसेट लिखा है, ऐसा क्यों? ये आप सब जानते हैं ना ऐसा क्यों लिखा मैंने? Yes, sir, because X नो सर, is बता दिए सर। an element where F is a subset. हाँ, X इज एन एलिमेंट, F इज ए सबसेट। ओके, अगर मैं इसको भी सबसेट के फॉर्म में लिखते तो मुझे लिखना पड़ता दिस सिंगलटन इज ए सबसेट Yes, ऑफ। sir. ओके, जी सर। सर एक सो बार ये फिगर T3 का प्लीज समझा दीजिए सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं सुन नहीं पाया। यस सर। कि एक स्पेस है X, ओके, जिसमें हमें दिया हुआ पहले से दिया है एक क्लोज सेट से, सपोज दिस इज ए क्लोज सेट, इसका नाम F कह रहे हैं। ओके, इसके बाहर एक पॉइंट दिया है X, F के बाहर। अगर X ओके सर। T3 होगा तो हमें दो ओपन सेट मिलेंगे, एक U मिलेगा जो कि X को कंटेन करेगा, एक V मिलेगा जो कि F को कंटेन करेगा, और ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट। U and V are disjoint. Okay, is this correct? Yes sir, please continue. Now another space is T4 space. इसको भी डेफिनेशन देख लेते हैं, हम बाद में देखेंगे साथ साथ रिजल्ट्स। T4 space is ओके, हमने किस किस की बात कर ली? हमने पॉइंट्स की बात कर ली, हमने एक क्लोज सेट और एक पॉइंट की बात कर ली। अब हम आते हैं दो क्लोज सेट। सपोज वी हैव टू क्लोज सेट, से F1, ओके, एक ये है, और दूसरा मान लो बहुत ही टिपिकल सा है, थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ये F1 है और दूसरा हम ऐसा बनाते हैं, ये F2 है। ओके, F1 and F2 are two closed sets. Suppose this is F1, this is F2. Okay, then there exist two open sets U and V containing each of them, means U contains say F1, ये ग्रीन वाले को हम F1 नाम देते हैं, सेकंड वाले को F2 नाम देते हैं। So there exists open set U which contains this, यहाँ बनाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, let me draw any. So there exists U containing V, and there exists V containing F2, and they are disjoint. So this was U. Okay, this is this was U. Now let me draw V. So V would be like this. सर Okay, फिगर do तो you हम see? कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, बस F1 और F2 हाँ, डिसजॉइंट होने चाहिए। हाँ, मैं मतलब ये मुझे इसलिए मैंने ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड F1 F2 हो सकते हैं, दिखने में लगेगा कि वहां पर नहीं ऐसा कोई ओपन सेट मिलेगा, लेकिन ऐसा हमेशा मिलेगा। ठीक है, वैसे मुझे स्कीमेटिक ग्राम, ये डायग्राम जब बनाना है तो मैं सिंपल क्या करता है, एक क्लोज सेट ऐसा बनाता है, एक मुझे ऐसा बनाना चाहिए था। सो दिस इज F1,
This is F2. Then there exists a U, there exists a V. Okay, simple diagram is this. Do you see this? Is this okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let me write the definition of T4. Okay. A topological space X is said to be T4 if given disjoint closed sets. Disjoint closed sets E, comma F in X. There exist open sets U and V in X such that E is a subset of U, F is a subset of V, and and U intersection V is empty. So they are distinct. Okay. So from T3 and T4, what we do, okay. So we add one more axiom, that is T1. पेन चला हुआ ना. So from in T3, if we add another axiom T1, then it is called regular space. Okay? Regular space. T3 space is regular if it is T1. Okay. हेलो हाँ वेट अ मिनट. हाँ बोलिए. सर वॉइस आपकी बहुत धीमी आ रही थी बीच में. हाँ वॉइस असल में वो कुछ ऑफिशियल काम आ गया तो साइन करने. Okay, so a T3 space is regular if it is T1. Okay? Or you can say a T1 space is regular if it is T3. Or a regular space means regular space is same as T3 plus T1. Okay. Similarly, normal space is a T4 space with T1 axiom. A T4 space with T1 axiom is normal space. Okay. So in previous lectures, you saw that T2 implies T1 implies T0. But looking at this definition, you will get a feeling that T3 does not imply T1. T4 does not imply T1. Okay. Are you getting that feeling or not? मैं यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ T3 में अगर मैं Yes, sir. T1 भी ऐड करता Here हूँ we तो are taking the closed sets, not the points. Okay, so let us see a set which is T3 but not T1. Okay. Okay, so example. So T3 spaces need not be T1. Okay.
So suppose x equal to a, b, c, 3-point set, and tau is empty set x, b comma c and a. Okay. So what are all closed subsets of this topological space X? So X is one of them, empty set, then A and BC. Do you see this? These are closed set. These are open as well. Hello? Yes, sir. So each of them is open as well as closed. Okay. So these are closed sets because they are complement of open sets. Okay. So, Yes, sir. so take any closed set and take a point outside that closed set. So this is a closed set. Outside point is A. Take A. So this A belongs to the open set A, and the closed set B is contained in itself. Okay. So because this is open as well, correct? So see here, it is a member of tau, therefore it is open. This means X is T3. Okay. So we have only this much options. So X is T3, X satisfy all the condition of T3, but X is not T1. Why this is not T1? Why does X not T1? Can anyone tell me why does X not satisfy the T1 axiom? Sir, because we have a open set which singleton A which contains A. So okay, so what is the definition of T1? So first let me draw a figure. ये हाँ सर बोलिए ये बोलिए जो ओपन सेट बी सी है, तो अगर हम एक्स के एलिमेंट बी और सी ले तो वो टी1 का वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ, बी और सी के लिए आपको ओपन सेट ऐसा मिल रहा है जो दोनों को कंटेन कर रहा है। दो ओपन सेट हैं, एक तो बी सी है और एक्स है, ठीक है। इनके अलावा कोई तीसरा ओपन सेट नहीं है। डू यू गेट दिस पॉइंट? यस हाँ, so because for the pair B and C, we have only two open sets which contains B, but both of them contain C as well. Okay, therefore X is not T1. X is not T1. So we have a space which is T3 but which is not T1. Okay. So next thing, T4 a T4 space need not be a T1 space. To see this, let us take an indiscrete space. Okay, indiscrete space. So in an indiscrete space, what we have P, we have X. So X is a closed set, but we do not find any point outside this closed set. Okay, so हमारे पास एक closed set तो है, कोई point A नहीं है जो कि उसके बाहर है। This means in discrete sets vacuously
satisfies T4 axioms. Okay? क्योंकि हमें केवल एक क्लोज सेट मिल रहा है जो कि ओपन सेट X के अंदर बैठा है और कोई पॉइंट हमें मिल नहीं रहा है तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं. सो ऐसा कहीं हो तो उसको वैक्यूअस थिंग कहते हैं. ओके, these are called vacuous. So indiscrete spaces are vacuously T4, but you know indiscretes are not T1, but these spaces are not T1. आप ये जानते हैं क्योंकि कोई भी दो पॉइंट लेंगे आपके पास एक ही ओपन नेबरहुड है और वो दूसरे को भी कंटेन करता है. ठीक है, इज दिस करेक्ट? ओके, हाउ? So in many books, so ये आपने, क्योंकि हमारा जो भी सिलेबस चल रहा है वो मंकर्स से चल रहा है. मंकर्स की बुक आप देखेंगे तो वो T3 नाम नहीं देता, वो सिंपली रेगुलर स्पेसेस डेफिनेशन देता है और उसमें एज्यूम करता है कि इफ सिंगलटन्स आर क्लोज्ड. ओके, if all singletons are closed in X, this means it is T1. ये हमने देखा था, in a T1 space all singletons are closed and vice versa. Correct? So in Munker's he supposes that that the space is regular if it is T1 and it satisfies the axiom which I called T3. Okay? और बहुत सारी बुक में ये T3 और रेगुलर को इंटरचेंज किया है. कोई उसको T3 को रेगुलर कहता है और देन रेगुलर प्लस T1 को T3 कहते हैं. तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये बुक टू बुक वेरी कर रहा है, टर्मिनोलॉजी है, कोई क्या नाम दे रहा है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए प्रॉपर्टी क्या है. ठीक है, और हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें रेगुलर स्पेसेस मींस a space which is T3 and T1. Correct? Is this okay? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, आ रही. Then here is an exercise for you. Find a Hausdorff space which is not T3, which is not T3. तो मैं आपको इसका आंसर भी देता हूं, बट इसको आपने सॉल्यूशन जो है आपने खुद से एक्सप्लेन करना है. इसको मैं आपको आप लोगों ने के टोपोलॉजी देखी है? के टोपोलॉजी ऑन आर याद है किसी को? ये हम लोगों ने किया था के जब हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस पढ़ रहे थे, बहुत सारे टोपोलॉजिकल स्पेस देखे, उसमें से एक स्पेस के टोपोलॉजी भी था, जो कि क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको. सो we are in R, this is R, this is 0, okay, say this is 1 and then 1/2, 1/3 and so on, 1/n करके ऐसे आएगा. So we define K as the set 1/n. N comes from Z plus. Okay, you know, if we are in usual topology, अगर मैं कह रहा हूं अगर हम यूजुअल टोपोलॉजी में होते, if we were in usual topology, the point 0 would be the limit point of K. Okay, ये K का लिमिट पॉइंट होता है, तो इसका मतलब क्योंकि K यहाँ पर नहीं है तो दिस K इज नॉट क्लोज्ड इन दी यूजुअल टोपोलॉजी. यूजुअल टोपोलॉजी कौन सी है? जहां पर बेस जो है केवल ओपन इंटरवल्स हैं. ठीक है, ओपन इंटरवल्स को हम बेस लेके चले. टोपोलॉजी जनरेटेड बाय ओपन इंटरवल इज दी
usual topology. So let us see whether this set K is closed in K topology or not. So in K topology, to define the K topology, we take this collection of sets as a base. So what are the sets? All open intervals, okay? सारे ओपन इंटरवल बेस के एलिमेंट हैं. तो इसका मतलब जो के टोपोलॉजी है वो यूजुअल टोपोलॉजी से स्ट्रॉन्ग है, फाइनर देन यूजुअल टोपोलॉजी. Here are some other base elements. What are those? Those are interval minus the set K, okay? Where less than B. Correct? So ऐसे भी एलिमेंट जो हैं वो बेस के एलिमेंट हैं. Since this part is open, since A comma B minus K is open, and you know R itself can be written as minus infinity comma infinity. So this means a base member can be written as a base. So a base member is this also R minus K. This is open, and this implies K is closed. Okay. So in K topology, this K is closed set, which was not closed in the usual topology. See the difference. Okay. See the difference. K topology क्या था? यहाँ पर closed set आ रहा है. K topology में this set K is closed, but it was not closed in the usual topology. Okay. So क्या करेंगे आप? To see this topology is Hausdorff is very easy, because you have seen that you told me that the usual topology is weaker than the K topology. Okay, and you know the usual topology is Hausdorff, or it is T2. Usual topology on R is T2. So this means for any 2 points X and Y, you have 2 open intervals which are disjoint. Okay, but these open intervals are open in K topology as well, because K topology is finer than the usual topology. So this means this K topology is, this satisfies T2 axiom. So hence K space is, so we call this RK. So we denote this by RK. This is T2. Okay, ये तो T2 आ गया. अब ये क्यों T3 नहीं होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास एक क्लोज सेट क्या है? K दिया हुआ है 1/2 से यहाँ पर कहीं पर 1/n है, एंड कुछ और भी पॉइंट हैं बहुत सारे, इनफाइनाइटली मैनी, and you have this point 0, okay, outside K. So this part is K, and here is the point 0 not in K. So you have a closed set and you have a point. So any open interval, any open set containing 0 is of this form, A comma B, of this form. Okay, any open set containing 0 is either of this form or A comma B minus K form. Okay, इसी फॉर्म का होगा. Is this correct? Yes, sir. Yes. लेकिन ये A comma B वाला तो K के साथ इंटरसेक्ट कर जाएगा. ये A comma B वाला हमेशा K के साथ इंटरसेक्ट करेगा ना? Yes, sir. ये देखिए यहाँ पर 0 है,
0 के अराउंड ए बनाया, ये बी बनाया, यहाँ पर आपका के था, यहाँ पर ये 1 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, फिर 1/n इसके अंदर आया। तो ये तो के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ग्रीन वाले 1/n के एलिमेंट 1/n है, वो इंटरसेक्ट कर जा रहा है। तो हम ये वाला नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे। तो ए बी माइनस के is the base element which contains 0 but it is outside K. Okay, is this correct? Yes, sir. Now you take another neighbor. अगर ये T3 होता तो आपको एक दूसरा, एक ये तो आपने U लिया, एक आपको V मिलता जो कि K को कंटेन कर रहा होता, करेक्ट? लेकिन K को कंटेन करने वाला जो ओपन सेट होगा, ये आपका R था और यहाँ पर 0.0 है, और ये आपने यहाँ पर मान लो मैं 1/n बना रहा हूँ। ओके, सो दिस इज 1/n। तो 1/n को कंटेन करने वाला, ऐसे ही 1 को कंटेन करने वाला कुछ होगा, सभी इसके के सभी पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक आपको ओपन सेट चाहिए, जो कि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स भी हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ कि आप 1 के कंटेन करने वाला एक सेट मान लो इस फॉर्म का है, ऐसा कुछ। ठीक है, सो now what you do, अभी हम ये ए बी का यूज करेंगे। आप ये 1/n ऐसा लीजिए, आपको मालूम है यहाँ पर a कामा b मान लो ये, तो मैंने 1/n ऐसा लिया है, वो वाला पॉइंट लिया है जो कि ए बी के अंदर आए, इंटरवल ए बी के अंदर आए। ऐसा क्यों? क्योंकि ए बी कंटेन करता है 0 को, और आफ्टर a certain time all 1/n's are inside this interval AB. Okay, so choose 1n suitably that 1/n belongs to AB. You can do that. There is nothing great about it. Okay. Now since this part is member of V, this is the part of V, so 1/n belongs to V as well. Okay, so therefore what you do, you choose an epsilon so that 1/n minus epsilon, ये एक छोटा आपने पार्ट लिया यहाँ पर, say suppose this part, this is 1/n minus epsilon, and this is 1/n plus epsilon. Okay, this is contained in V. Now what you do, you choose a point, say Z at this place, say this is the point Z. Okay, Z is greater than maximum of 1/n minus epsilon and 1/n plus. Choose this point, and definitely it is less than 1/n. Choose this point. Then what you do, what you observe that this Z, so आपने इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, फिर से जो भी चीजें मैंने लिखे हैं उसको मैं फिगर में बनाता हूँ। ये हमारे पास रियल लाइन थी। ओके, बहुत ही गंदी रियल लाइन मैंने बनाई है। यहाँ पर 0.0 है। ओके, और आपके पास इंटरवल a, b है, जहां पर इसमें 1/n एलिमेंट यहाँ पर है, और 1/n plus 1 यहाँ कहीं होगा। ओके,
और आपने जो भी इंटरवल लिया था u, जो भी ओपन सेट u लिया था, ये इसमें से ग्रीन वाले पार्ट मिसिंग थे। ओके, ये सब मिसिंग है। आपने एक v लिया जिसका एक पार्ट 1/n माइनस एप्सिलॉन 1/n प्लस एप्सिलॉन लिया। ओके, आपने एक पॉइंट z चूज किया, यहाँ पर z इधर चूज किया, जो कि 1/n प्लस 1 से बड़ा है, 1/n माइनस एप्सिलॉन से भी बड़ा है, और 1/n से छोटा है। So choose this z. Okay, so this z satisfies this property. Okay, so this means this ab comma ab minus k, this contains this point z. Okay, and also this z belongs to v. ये आपके पास u था और z u में भी मिला, z v में भी मिला, आपको मिला u इंटरसेक्शन v is non-empty. Okay, and this is true for any member of k and the point 0. Okay, so this means x is not t3. X is not t3. Okay, do this again. Then what we have is similarly, a similar example that we saw for a T4 space, an indiscrete space. An indiscrete space is T3, but not T1. Okay, it is T3 but not T. Next thing, a regular space is T2. Regular space is T2. This is the theorem. So T2 प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है? और मान लीजिए एक स्पेस x टाउ है जो कि रेगुलर है, इज रेगुलर, and 2 points are there. So you choose any 2 points, any 2 arbitrary points, x and y. Your aim is to show the existence of 2 open sets, u which contains x, v which contains y, such that u intersection y is empty. Okay, so आप जानते हैं रेगुलर स्पेसेस आर T1 plus T3. Regular spaces are T1 and T3. In T1 spaces, every singleton set is closed. This you know. Correct? Is this okay? Yes, In a sir. T1 space, every singleton is closed. Okay? So choose this set singleton, call this F. ये एक closed set है. Call F equal to singleton set. This is closed in X. Okay, now you have this point X, you know X not equal to Y, X not in, so X not in F, so this is X minus F. Okay, is this correct? Now X is T3, X is T3. So using the property of T3, what you get, you will get 2 open set U and V in X, such that F is inside V, X is inside U, and V intersection U is empty. Okay, but what is F? F is nothing but Y, singleton Y. This means Y belongs to V.
X belongs to U, U intersection V. Okay, so you have found that this X is T2 or Hausdorff. Okay, hello, is this okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट, ये हम यूज करेंगे, इसको आप ध्यान रखिए बहुत ही। ये यहाँ पर आपने अगर आप फिगर से देखते हुए चलते हैं तो ये सब चले आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इसका फिगर से इस क्वेश्चन को करते हैं तो वी हैव x, we choose 2 point x and y, and since x, capital X is T1, this is closed, this set is closed, okay, this y is a closed set, and X is T3 also, so you get these two open sets, U and Y. तो ये तो आपने दिया कहां से, T3 implies, sorry, regular implies T2. Now, another theorem, a topological space, X is T3, if and only if for every open set G in X and a point, any point in G, there exists an open set H in X such that X belongs to H. H is a subset of H bar and this H bar contained in G. So let us see this in figure. So we have this topological space X and we have any open set. Say this is an open set and for any point in G. So this is open set G, okay? And we have any point X here. Now what does it say? It says there exists an open set H such that this holds. So this is my H, okay? H is contained in H bar, so H bar will be this part, okay? So clearly H bar contains H, correct? So this whole thing is H bar, this was inside part was H and with this with boundary is H bar, and you see X belongs to H, H is the subset of H bar, and it is, you can see that this is contained in G. So let us prove this. We will use this figure, okay? So we will taking clue from this figure. So suppose X is T3, and let G be an open set, and X, this be given, these are given, these things are given, okay? We are given an open set G and a point X in it, okay? This thing we are given. So since G is open, what can you say about X minus G? It is closed. It is correct? Yes, sir. अब X minus G closed है और ये X जो था वो G के अंदर था, this means X cannot be in X minus G. Is this correct?
Is this correct? Yes, sir. Call it f. इसका नाम आप f दे दो. Okay. Now you have a closed set f. You have a point x. Okay. And your topological space is T3. Topological space is T3. What do you infer from here? आपके पास आप एक T3 स्पेस में हैं जहां पर आपके पास एक क्लोज सेट है और उस क्लोज सेट के बाहर एक पॉइंट है. तो क्या मिलेगा आपको T3 स्पेस होने के कारण? बताइए. T3 की डेफिनेशन क्या है? सर दो ओपन सेट मिलेंगे U एंड V जो एक क्लोज को कंटेन करेगा और एक उस पॉइंट को कंटेन करेगा. और साथ में वो दोनों डिसजॉइंट है ना. तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स U and V such that X in U and V is in sorry, this F is in V and V intersection U is empty. This is what you see. Correct? Yes, sir. Okay. Since this U intersection V is empty, तो अभी आप देखते हैं ये जो फिगर थी इस फिगर में x माइनस जी मैं बना रहा हूं. So x minus g is this part. Correct? This red part is x minus g. Okay? And small x lies here. By T3 axiom, you said that there exists open set containing x. Say this is U. Okay? And there exists open set containing F. So this is open set containing F. Okay? ये पूरा वाला पार्ट F था. सॉरी ये पूरा पार्ट दूसरा सेट है V. करेक्ट? आपको दिखाई दे रहा होगा ये? Yes, This was sir. U. This is U. Okay? And this part was V. Okay? And both U and V are disjoint. अब U और V disjoint है तो इसका मतलब ये जो U है, ये जो U है ये x minus V के अंदर है. Can you see that? इसको मैं साइड में यहाँ पर बना रहा हूँ दोबारा से. बहुत लाइन्स नहीं ड्रॉ करूंगा जिससे कि आप समझ पाए. So this was G. Okay. And this was U. यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ किया था मैंने शायद. सर x माइनस जी है जो g के बाहर. हाँ. ये मैंने इसको G जिसे लिखा है वो मैंने X मान लिया था शायद लास्ट का वाले होगा केस में. है ना सर? हाँ वो मैंने शायद वहाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं दी. Okay. So now see this. So this part is X. This part is X. This is G.
this is G. So this part is X minus G. Okay, you took a point X there. Okay, so this green part is F. This green part is F. Correct? So by definition of T3 space, we will get two open sets. So I am drawing the open set V by yellow, which will contain F. So this outside part is V. Okay, this is V. Correct? This part is V. This outside part. Outside this yellow, whatever I'm drawing now, outside this is V. Okay. So let me now draw U. U is this, which contains X and which is disjoint from V. This is U. Okay. U intersection V is empty. You can see this. So this U is definitely inside X minus V. What is X minus V? I am drawing that by pink color. X minus V part is this. Do you see that? Yes, sir. This is X minus V. And you can clearly see U is sitting inside X minus V. It can be easily seen from this figure. This is my U. Okay. और ये X minus V के अंदर बैठा है. So from here, what you get this U is sitting inside X minus V. And what is V? V was open. So what can you say about X minus V? It is closed. Is this okay? Is this okay? Yes, sir. Yes, sir. Or F was inside V. So what would be the relation between, so you have this F was inside V. What would be the relation between X minus F and X minus V? F is a subset of V. Which one is subset of another? Means which is subset, which is superset between X minus F and X minus V? X minus F is a superset of X minus V. So this is X minus F. X minus V is subset of X minus F. And this is clearly inside. Okay, this is inside X, but you have called X minus F as G. Okay, यही नाम दिया था आपने. X minus G को F बोला था तो X minus F G हो जाएगा. ठीक है. Now use that X minus V is closed. Therefore, X minus V bar is X minus V because X minus V is closed. And from this inequality, what you get, U bar is inside this. And this is inside G. So what you get, X belongs to U, U is inside U bar is inside G. Okay? Call this, call H equal to V. तो आपने ऊपर थ्योरम में H लिखा था.
So call H equal to U. Okay. So this figure is not correct. Okay. So sorry, this one was not correct. So I assume this as X, then it is correct. Otherwise, it was not correct. Okay. So this one is correct. So we are done. One part, and another part I will leave as an exercise. Converse part is an exercise. So read this. If you face any difficulty, then please ask. Okay. So a corollary of this thing, corollary of this is following. A topological space X is T3 if and only if every point X in X has a local base consisting of closed neighborhoods of X. Okay. So आपने देखा कि कोई भी ओपन सेट के अंदर एक क्लोज सेट मिला, ये ओपन सेट जी था, इसके अंदर एक क्लोज सेट मिल रहा था, कोई भी ओपन सेट के लिए ट्रू था और किसी भी पॉइंट एक्स के अराउंड ऐसा हो रहा था. तो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा. तो you choose any point, any open set containing this point will contain a closed neighborhood of X. Okay, so that will give you this result. Next thing, every metric space is the T3. Every metric space is T3. So this is very easy. अगर कोई metric space है वो कैसे closed होगा, sorry वो कैसे T3 होगा. To see this, what you get, you use this corollary. तो किसी भी पॉइंट के अराउंड आप एक लोकल बेस बना सकते हैं जो कि क्लोज नेबरहुड कंटेन करता हो. तो आप जानते हैं बी एक्स कोई पॉइंट है, उसके अराउंड एक लोकल बेस इस फॉर्म का होगा, बट आपको क्लोज नेबरहुड चाहिए. तो व्हाट यू डू, यू टेक दिस आपने एक्स के अराउंड बॉल्स ले आर रेडियस की, आर को आप छोटे से बड़ा करते जाइए. Okay, so if you are taking this open set, you take its so you take a disk with radius r by 2, take its closure. This will definitely in bxr. Okay, so then you choose bxh, bxr bar, r is positive. This is a local base of closed neighborhood. Okay, thus X is T3. So therefore, every metric space is T3. So if you have proven every metric space is T3, you also know that every metric space is T1. Therefore, every metric space is regular. Every metric space is regular. Okay. Being this T3 space is a hereditary property. What does this mean? This means subspaces of T3 spaces T3. Okay. So this part is again easy. So I'll leave this as an exercise. क्योंकि आप जानते हैं कि आपने एक y एक सब स्पेस लेना है x का, आपने y में एक क्लोज सेट लेना है, क्लोज्ड इन y, and a point x in y minus f. Okay, but you have to show that there exists an open neighborhood of f
which and an open neighborhood of V which are disjoint. Okay, so I'll leave this as an exercise. So I'll stop here. We will continue tomorrow. Okay. Okay. Any question? तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए। और कल के टेस्ट में किसी को कोई क्वेश्चन था? हेलो हाँ हेलो सर, हाँ कार्डिनलिटी वाला सर एक बार बता देते क्वेश्चन। कौन सा कार्डिनलिटी वाला? जो क्वेश्चन आपने दिया था कल टेस्ट में। हाँ तो कि अगर वो कोफाइनाइट connect- टोपोलॉजी वाला। हाँ कोफाइनाइट वाला। हाँ तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में जो फाइनाइट सेट में कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या बनाता है? डिस्क्रीट स्पेस बनाता है। ओके, if you have a finite space, finite set, and you are giving a cofinite topology to it, it will nothing but a discrete topology. आप जानते हैं discrete space जो है वो कनेक्टेड नहीं होते अगर उसकी कार्डिनलिटी एक से ज्यादा है। तो ओनली एक ही sir. स्पेस है जो डिस्क्रीट है और कनेक्टेड है, वो सिंगलटन वाला स्पेस है। ओके, तो Okay, sir. आंसर है कि नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, और कुछ डाउट? नो सर। आपने वो रियल वैल्यूड फंक्शन किया? यस सर। कैसे किया था? ओके, डिस्कस कीजिए इन चीजों को, सब आप ग्रुप में डिस्कस कीजिए। बाय एवरीवन। बाय। हैप्पी दशहरा टू। Thank you, sir.